Assalamu alaikum everyone. This is Mavish Sayed and you're watching Dialogue with Emerge. Dialogue with Emerge का ये बहुत स्पेशल एपिसोड इस वजह से भी है कि एक तो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और दूसरा ये इस ईयर 2020 का लास्ट प्रोग्राम है ऑफ द सीरीज. In 2021, inshallah, we'll be having a lot of interesting people on board with us to engage them in a wonderful dialogue. लेकिन इस साल का ये आखिरी प्रोग्राम है. Before I introduce the guest who's sitting right here with me, उससे पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी. हमने ये पूरा साल जनरली एक काम करते हुए गुजारा. वो क्या था? हमने सिर्फ 2020 को कोसा है बैठ के. हमने सिर्फ ये कहा है कि दिस ईयर हैज बीन हॉरिबल, ये साल कितना बुरा था, ये साल होना ही नहीं चाहिए था. मीम्स बनाई गई जिसमें सिर्फ 2020 को बुरा कहा गया. और अब हम सबके सब एंक्शियसली वेट कर रहे हैं कैलेंडर के चेंज होने का और जनवरी बस लिखा हुआ आएगा. एंड मोस्ट ऑफ अस डू बिलीव कि कोई बहुत बड़ा मिरेकल होगा और 1 जनवरी को हम सबकी मुश्किलात आसान हो जाएंगी. There will be no virus, no misery, no debts, no problems और कारोबार भी सबका फ्लरिश करने लग जाएगा. अगर आप उन लोगों में से हैं जो anxiously इंतजार कर रहे हैं 2021 के आने का, by doing nothing, just sitting and waiting for the miracle, sad news, nothing is going to change. What if I tell you that this 2020 might be a training period for all of us for more difficult times to come? हम सब इस बात पे तो agree करते हैं कि with every passing years things will get tough. Not necessarily कि virus ही आए, it can be some technological advancement जहाँ हम पीछे खड़े रह गए हों, maybe some new inventions, some innovation जिसमें हमने अपने आप को prepare नहीं किया हो. तो ये साल अगर आपने सिर्फ बैठ के इंतजार करके गुजारा है तो कोई कमाल नहीं होने वाला डेट चेंज होने से. But if you were the one who adapt, who brought the change what was needed for the time, who learned new skill, congratulations. 2021 में आप शायद वाकई कोई कारनामा अंजाम दे दें. A lot of teachers will agree with me. उनको कभी नहीं पता था कि ऑनलाइन क्लासेस किस तरह की जाती हैं. उनको वो पूरी जिंदगी बोर्ड पे खड़े होकर पढ़ाते थे. 2020 taught them how to take hybrid classes and online classes. Lot of us who were working in IT industry, उनके लिए साल अच्छा साबित हुआ. बहुत सारे companies, billion-dollar companies हो गई जिनको कोई पूछता भी नहीं था. 2020 happened to be amazing for a lot of people. But it's all about your perspective. It's all about how you look at things to make sure that you look at things positively. किसी भी प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी निकालने का कमाल भी हमारे ही हाथ में है और किसी भी अपॉर्चुनिटी में प्रॉब्लम निकालना और उसको अपने क्या कहते हैं इस्तेमाल में ना लाना, उस अपॉर्चुनिटी का फायदा ना उठाना भी हमारे ही हाथ में है. Anyways, हमेशा की तरह आज I have got a very interesting guest with me with a very different sounding topic, which is leading in a quantum world. I have Sahib Karim Khan with me, so please welcome the amazing trainer, writer, business coach, Sahib Karim Khan. How are you, Sahib Karim Khan? Thank you very much, Mavish. I am doing great, and I am very excited to be here as the last guest for this year. So I am glad to be here, and I hope that all our viewers have joined us and they are ready for this discussion. Yes, Sahib, you have written a very interesting book, which is Leading in Quantum World. I started reading this book. बहुत ही interesting है. सिर्फ टाइम की कमी की वजह से I wasn't able to finish it. लेकिन जो भी मैंने पढ़ा, it's very interesting. सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि नाम से ये कुछ लग रहा है कि कोई क्वांटम फिजिक्स की बात हो रही है. ये शायद सिर्फ साइंसी मालूमात रखने वाले लोगों का इंटरेस्ट करेगी. Tell me, what is your target audience? Okay, well, so let me put it this way, Mavish. So first things first, today's target audience, in my opinion, would be anyone and everyone who would like to know something about leadership. And in my opinion, every single person is a leader. So आज की जो हमारी गुफ्तगू है उसमें मेरे हिसाब से target audience वो है जो leadership में interested है. And as far as the book is concerned or the physics part is concerned, अगर आपको चाय बनाने आती है या अगर आप सिर्फ पानी भी गर्म कर सकते हैं, then you know enough physics to understand today's topic. So
we'll try to keep it very simple. और आपने किताब में देखा भी है कि हमारी कोशिश यही रही है कि we try to explain everything in a very simple manner, और connect करने की हमने कोशिश की है कि how quantum physics is connected with leadership and how it can help us become better people, better leaders. और उसमें बहुत सारे टॉपिक्स को हमने बहुत आसान तरीके से लोगों को बताने की कोशिश की है. Specifically, if you are interested in physics or quantum physics, you Actually, I think there is some problem with the internet. I cannot hear you. Can you hear me, Sahib? I think he's disconnected. Let's wait a bit. Let me call him and tell him that I cannot hear him. Yes, you got disconnected. Can you hear me now? Yeah, I can hear you. Can you hear me now? Yes, I can hear you. अच्छा, आप ये बात कर रहे थे कि ये क्वांटम फिजिक्स जो है वो इतनी कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है. अगर मुझे चाय बनानी आती है तो वो उसमें भी फिजिक्स है. हर चीज हमारे इर्द गिर्द जो भी है वो सब साइंटिफिकली ही हम एक हिस्सा बने हुए हैं साइंस की मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स का. टेल अस बिट अबाउट क्वांटम फिजिक्स. ये होती क्या चीज है? ये वर्ड है क्या, क्वांटम? Okay, perfect. So let's try to understand what is physics first before we go into understanding quantum physics. So physics को अगर हम आसान ज़बान में, जिस तरह हमने कहा है कि आज की गुफ्तगू रखेंगे, तो आसान ज़बान में physics को हम यूँ समझ सकते हैं कि the way anything works. So for example, I have this cell phone. How does this work? So ये काम कैसे करता है? Physics tells us about that particular thing. अब आ जाते हैं quantum physics पे और quantum पे. So quantum physics is the study of things at a subatomic level. So universe is made up of atoms. तो हमारी और साइंस की बहुत अर्से तक ये हमारी अंडरस्टैंडिंग थी कि जी सबसे बेसिक एलिमेंट इस दुनिया में जो है वो अगर है तो वो जो आपके एटम्स हैं. Now science has sort of proved है, यानी सब एटॉमिक लेवल एटम से भी एक स्टडी ऑफ सब एटॉमिक लेवल पे क्या हो रहा है, द स्टडी ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड क्वांटम फिजिक्स. इसीलिए क्वांटम अगर आसान जबान में हम समझे, क्वांटम का मतलब होता है छोटा, बहुत ही छोटा, बहुत ही माइन्यूट. सो क्वांटम फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ थिंग्स दैट हैपन in a subatomic level. और for our audience, interesting बात ये है so your internet is I think we have lost. I can't hear you, Kareem. I think your internet is messing up again. I think I should call him and... Okay, we have lost Sahib Karim right now. I hope he joins again. In his book, what I really found interesting was, of course, when I picked that book, I was also thinking कि ये कुछ बहुत heavy होगा on me as somebody who is not a science student. But अगर आप उस किताब को पढ़ेंगे, which is available on Amazon, तो ये बहुत interestingly ये बड़ी आसान ज़बान में लिखी हुई है, जिसमें हम
मुझे ऐसा लगता है हर लिखने वाला हमें एक नया पर्सपेक्टिव देता है, हमें एक नया अंदाज देता है सोचने का. साहिब, योर इंटरनेट इज नॉट लेटिंग अस टू हैव अ क्या कहते हैं स्मूथ कॉन्वर्सेशन. अब मुझे ये बताइए कि you have just explained what quantum is. How we can improve leadership, organizational level pe, personal level pe, using these quantum, the science of quantum physics. Okay, well, how we can improve leadership and what are some of the tools that we can use from quantum physics? इसके लिए मेरे ख्याल से पहले तो मैं ये कहूँगा कि किताब पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है. उस किताब में उसकी डिटेल्स हैं, लेकिन मैं मुख्तसरन एक दो आपको एग्जांपल्स दे सकता हूँ जिससे लोग समझ सकते हैं कि हाउ कैन वी इम्प्रूव our leadership skills using quantum physics. So let me say, ask a very simple question. If you are a very competent person, wouldn't you want that your team members are as competent as you are? Yeah. And as a person, as a competent person, you cannot be at two places at the same time. But quantum physics में एक concept है जिसमें ये कहता है, जो ये बताता है कि एक ही particle एक time में दो जगहों पे हो सकता है. And that is something which we are trying to inculcate in our leadership skills as well. So quantum physics में ये एक concept है जो दिया गया है. हम leaders को ये बताते हैं कि we can use the similar concept. As leaders, you cannot be at two different places at the same time. But if you are developing your team to be as competent as you are, as energetic as you are, as enthusiastic as you are, then definitely you can be at two different places at the same time. So this is one of the concepts which is taken from quantum leadership, quantum physics, I'm sorry, और उसको हम use करते हुए अपनी leadership को improve कर सकते हैं. Then secondly, हम जिस दुनिया की तरफ जा रहे हैं, we are going into a quantum world. So quantum computers are just around the corner. So we may not all of us may be knowing about quantum computers and what they can do and what they can't do, but trust me, 10-15 years down the line, there is a very high probability that we might be having quantum computers in our offices. So how do you prepare yourself for that kind of world? And when I say preparing yourself, Okay, I think we have lost him again. Let's wait a bit. Okay. Yes, and if we will not prepare ourselves for the quantum time, then definitely we are going to be the people who are left out, because other people are preparing themselves. So देखें, दुनिया तो नहीं रुकती है ना, दुनिया ने तो आगे जाना है. Someone is going to be there to lead. If it is not you, if it is not me, then there's going to be someone else who is going to lead that change, and we would be following it. So my humble opinion, my humble suggestion is that why don't we lead it rather than following it? So maybe we would not be perfect initially. We would not know everything about whatever is going to happen in that quantum era. But if we are the ones who take those initiatives, who take those risks, then definitely in the long run, we would have far better chances to lead rather than to follow others. ये बात आपकी सही है कि दुनिया नहीं रुकती, और हमारा जो भी मैंने बिल्कुल शुरू में बात करी कि 2020 को अगर हमने इस अच्छे वक्त के इंतजार में गुजारा और ये रोते धोते गुजारा कि ये वक्त तो जैसे एक आम आपने देखा होगा कि इंटरनेट पे अभी एक ट्रेंड चल पड़ा है कि whoever dies, सैडली लोग लिखते हैं कि और 2020 हमें क्या दिखाएगा, as if people were not dying before. जब आप जो बात करें क्वांटम कंप्यूटर्स की या इन सब चीज़ों की, the more I study about how the world is advancing, and when I look at people like us and हमारे जो बाकी fellow Pakistanis हैं, हमें
एक बहुत बड़े रिफॉर्म की जरूरत है, हमें पूरी ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, एंड एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम योर माइंड, फ्रॉम व्हाट यू थिंक. अगर हम आज से बड़ा सोचना शुरू करेंगे तो वी विल बी एबल टू compete विद एवरीबडी इन द वर्ल्ड, और दुनिया किसी के लिए नहीं रुकेगी, हम पीछे रह जाएंगे. आर यू स्टिल हियर विद मी? क्योंकि अब एक इन्होंने बड़ी मजेदार जिक्र किया था अपनी किताब में, राइडिंग योर क्वांटम कार. कैन यू हियर मी साहिब? ओके, सो वो बड़ा एक मजेदार सा एक छोटा सा वो है, देयर इज अ पैराग्राफ अबाउट राइडिंग योर क्वांटम कार. उसके बारे में बताइए. उसके बाद यू हैव टोल्ड अस अबाउट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें अपने अंदर डेवलप करने चाहिए इन ऑर्डर टू राइड द क्वांटम कार बेटर. तो टेल अस अबाउट दैट. Okay, sure. So riding the quantum car is basically एक स्टोरी हम बताना चाह रहे हैं. लोगों हम कह रहे हैं कि यार think about the future, and आप सोचें कि फ्यूचर में एक आपके पास एक लेविटेटिंग कार है. तो जिस तरह आज आपके पास गाड़ी है जो रोड पे चल रही है, तसव्वुर करें, इमेजिन करें that you have a car in the future which levitates. तो उस कार में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, और उसको हम कंपेयर कर रहे हैं आज की गाड़ी से. और स्पेसिफिकली यहाँ पे हमारा फोकस है उन वैल्यूज पे कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको फ्यूचर की उस आप अपने अंदर आपने डेवलप करनी है. सो फॉर एग्जांपल द कार ऑफ द फ्यूचर दैट लेविटेट, उस गाड़ी को चलने के लिए उसका एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए. उसके इंजन होंगे डेफिनेटली कोई ना कोई. देन उसके बाद उसका नेविगेशन सिस्टम होगा. देन उसका अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा. सो एवरी सिंगल एलिमेंट उसको हमने एक वैल्यू के साथ एसोसिएट किया है. And I'm not going to talk about all the values here, but I'll give you one simple example. So for example, compassion is one of the values which is very critical for the leaders of future. So if you do not have compassion, you would not be able to lead your organization, your family, your country. So we are focusing on these 5 values. And again, I'm not going to talk about those values. I would request people to go and read the book. But these values are very important. And one of those values that I believe that future leaders need to focus on, and that is compassion. And there's a difference between compassion and caring. You can care for someone, but having compassion for that person is entirely a different ball game. So you don't just need to feel for that person, but you need to make sure that whatever is best for that particular person, you do it. So compassion is taking, let me put it this way. For example, you are working in a nursing home and you are taking care of elderly people. So when you give them medicine on time, that is caring for them. But that is just caring. That's not compassion. Compassion comes in when you sort of understand as to what are the other needs that those people may have. सिर्फ उनको दवाइयाँ टाइम पे देना या मेक श्योर करना कि जी उनका बेड तैयार है, उनको खाना टाइम पे मिल रहा है, maybe that is not enough. Compassionate person is a person who understands the other person at a deeper level. उसको पता हो कि यार इस बंदे को दवाई के साथ साथ भी शायद किसी चीज की जरूरत है. इस एल्डरली पर्सन को शायद ये किसी से बात भी करना चाहता है, शायद ये किसी से अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस भी शेयर करना चाहता है, शायद ये कोई अपने मशवरे देना चाहता है, शायद ये कोई बात शेयर करना चाहता है. So when you are compassionate, only then you think about these needs of that particular individual. So I think in the corporate world, we need to focus on developing compassion. And there are other values as well that we have talked in the book, but compassion is probably one of the most important things or important values that I believe that leaders need to instill in themselves. जैसे आजकल लोग एक बात कहते हैं ना कि IQ is of course important, लेकिन आजकल EQ पे बहुत ज़्यादा फोकस है कि you need to be emotionally intelligent too. And I personally actually strongly feel कि for anyone, be it a businessman or a woman or a common person who's not doing anything, emotional intelligence plays a vital role in anyone's success. दुनिया तेजी से बदल रही है, rapidly change हो रही है. Let's talk about us Pakistanis only. What
2 थिंग्स और 3 की थिंग्स जो आपको लगता है कि ये हाई टाइम है कि अब हम अपने अंदर इनकलकेट कर लें, अब हमें कम से कम इस धारे पे तो चलना शुरू हो? एज अ ट्रेनर आई एम श्योर यू मीट लॉट ऑफ पीपल ऑल द टाइम। जब हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कुछ चीजें कि यहाँ हम अगर लैक ना करें ना तो हम भी शायद जो एडवांसमेंट जो लोग कर रहे हैं या फिर जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं हम वहां तक पहुंच सकते हैं। मैन पावर की कमी नहीं है, पॉपुलेशन की कमी है, यूथ की कमी नहीं है हमारे पास। वो कौन सी चीजें जो हम अपने अंदर डेवलप कर लें अब जरूरी है? ओके, जहाँ तक मैंने मैंने जो मेरा इंटरेक्शन रहा है थ्रू आउट पाकिस्तान, मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि या 2-3 थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वुड से इज द माइंडसेट, द ऑप्टिमिज्म. ये मुझे लगता है कि पाकिस्तान में इसका बहुत फुकदान है. Whenever you talk to anyone, the first thing they will say that comes out of their mind is comes out from their mouth is something negative. ये नहीं हो रहा है, ये मसला है, मेरे साथ ये गलत हुआ, इसने ये गलत किया, ये गलत है. So we are focusing so much time and energy and focus on the negative aspects that we are not growing. So I think first and foremost we need to learn to be positive. We need to remember this कि जी कोई भी बंदा शायद पैदाइशी तौर पे पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता है, उसको चीजें सिखाई जाती हैं, वो सीखता है. So similarly, जिस तरीके से हम कोई भी चीज सीखते हैं, I think as Pakistanis, we need to learn how to be positive. That is, I think, very, very, very important. Okay. दूसरी चीज, we need to be focused. We need to understand as कि जी what do we need in our life? What is our objective? हम यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हम काम करते हैं, and a lot of times we see that people are not clear about what do they want in their life, or what do they want from their career. So that clarity is very 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 important. मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप कौन से करियर में जाएं, कौन से पे ना जाएं, जिसमें भी जाना चाहते हैं आप जाएं, but you need to have the clarity as to what you want to do. That is very important. And then third thing which I would say is very very important is developing competence. So regardless of the industry, regardless of your position, regardless of your family background, सारी चीजों को छोड़ दें. You need to focus on developing your competence. Develop your competence, develop your competence, develop your competence, and develop your competence. अगर आपने अपनी competence development पे continuously काम किया, आपका mindset अगर positive है, you have that growth mindset where you understand that this is a muscle just like any other muscle in my body. So if I use this muscle is going to get stronger and stronger and stronger. Same goes for your optimism. You cannot be a negative person cannot become optimistic or positive overnight, but with the passage of time, with continuous efforts, he or she can become. So आप हर चीज में positive. For example, if I am a negative person, I cannot become positive overnight. But मैं कम से कम अपनी जिंदगी में एक चीज को positively देखना शुरू कर दूं. हाँ यार ठीक है, मेरी जिंदगी में सब कुछ गलत हो रहा है, सब कुछ नेगेटिव हो रहा है, लेकिन हाँ ये एक चीज अच्छी हो रही है, चलो इसमें शुक्र करूं अल्लाह का. And then by focusing on that one particular thing, then I can look for the second one and the third one and the fourth one. And just like any other muscles, हमारी optimism की muscles भी strong होना शुरू हो जाएंगी. अभी हमारी pessimism की muscles इतनी strong है क्योंकि हम उसको बार बार use करते हैं. कहाँ मसला है जी? पाकिस्तान में मसला है, रिश्वतें यहाँ पे, लाइट नहीं आती है, गैस नहीं आती है, लोग करप्ट हैं, गर्मी है, ट्रैफिक है. तो हम क्या कर रहे हैं? उस मसल को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं. When we talk about positive things in our life and we talk about positive things in our organization, in our family, in our culture, in our country, then definitely we would be able to see those things positively. And remember, positive energy is far, far, far more stronger than negative energy. तो जब भी आप किसी से बात करते हैं, आपको वाइब्स आती हैं. You get either those positive vibes or you get the negative vibes. देखिए जिंदगी में किसी का असर नहीं पड़ता है, लेकिन आप जो अपनी एनर्जी शेयर करते हैं लोगों के साथ, that is going to come back to you. The universe gives you back what you give it. आप यूनिवर्स को नेगेटिव एनर्जी दें, वो आपको नेगेटिव एनर्जी रिटर्न करेगा. You give the universe positive energy and you are going to get positive energy. You focus on your strength, you focus on your blessings,
and you get more of them. You focus on your weaknesses, you focus on your areas of improvement. तो वो शायद उसी तरीके से चलता रहेगा. So I think these are the three key elements that I strongly believe that our nation needs to focus on. That is wonderful message. Since कुछ साल पहले I studied about law of attraction, मुझे ऐसा लगता है कि एक तो everyone should know how greatly it impacts us. Secondly, ये ट्रेनिंग का हिस्सा होता है. वो जो आपकी वाली बात कि पहले दिन हम उस तरह ट्रेन नहीं होंगे. बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम इतना ये जो सैडनेस, पेसिमिज्म, नेगेटिव माइंडसेट हमारा इतना डीप रूटेड है कि whoever you speak to, whoever you meet, वो हमेशा आपको 5 खराब चीजों के बारे में जिक्र करेंगे जो आपके इर्द गिर्द हो रही हैं. But if you become a positive person, if you have a positive mindset, आपको वो slowly, gradually वो चीजें नजर आना भी बंद हो जाती हैं. जब बारिश हो रही होती है तो 2 तरह के लोग होते हैं. एक वो जो जमीन पे कीचड़ देखकर और पानी भरता देख के सिर्फ एंजाइटी का शिकार हो रहा होता है और बारिश को बुरा भला कह रहा होता है, और एक वो शख्स होता है जो आसमान को देख के और धुले हुए सारी बिल्डिंग्स और प्लांट्स को और दरख्तों को देख के खुश हो रहा होता है. Similarly, when you go somewhere, the pessimist would find कि बुफे में कोई खड़ा है या कोई कहीं invited है, pessimist या फिर negative thinker would find all those dishes which are tasting bland. Whereas जो बंदा हमेशा हर चीज में कुछ अच्छा देखता है, उसको डिजर्ट बहुत अच्छा नजर आ जाएगा, उसको गार्लिक नान बहुत मजेदार दिख जाएगा, वो एक चीज ढूंढ लेगा उस बुफे में से भी जिसको अक्सर लोग कह रहे होंगे कि it tastes bland. It's all about your mindset. And एक और चीज कहते हैं, you attract your type of energy. Your wife creates your tribe. अगर आपके साथ बुरा हो रहा है, आपके इर्द गिर्द सारे के सारे पेसिमिस्ट लोग हैं, आपका बिजनेस नहीं चलता, आपके फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं है, लोग आपके साथ अच्छे नहीं है, इट्स द हाई टाइम कि आप अपने गिरबान में झांकें. आप नेगेटिव हैं तो सब इर्द गिर्द के लोग नेगेटिव हैं. यू ऑलवेज रिपेल द काइंड ऑफ पीपल जो आप खुद नहीं है, एंड यू अट्रैक्ट योर काइंड ऑफ एनर्जी. वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड दैट. थैंक यू सो मच साहिब फॉर बीइंग on the show. If you want to add anything as a concluding statement, please do that. और उसके बाद we'll just wind up this discussion. Well, thank you very much once again for inviting. और मैं concluding remarks सिर्फ यही दूंगा जो भी हमारे viewers हैं कि remember these 3 things. That's it. Be the person who is positive. Have that growth mindset. दूसरा अपने अंदर competence develop करें. और तीसरा ये कोशिश करें कि you add value in people's life. And if you cannot do anything else, at the least you can do is share your positivity, share your positive energy. और कुछ नहीं कर सकते तो एक मुस्कुराहट ही शेयर कर दें लोगों के साथ, so that whenever anyone interacts with you, they remember you as a person who was positive, who was hopefully competent, and the person who made your life a little better. So that is going to be my message. Absolutely. And like someone said, you will not remember what somebody has done for you. You always remember how the other person made you feel. और हम हमेशा pleasant लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं. Nobody likes to be with somebody nagging, complaining, whining. So be very careful with what you become, and everything starts from your mind. Everything starts from how you think. So शुरुआत हमें positive thinking से करनी है. Thank you so much for being on the show. I hope you keep doing the amazing work that you're already doing. आपकी जो किताब का लिंक है जो Amazon पे जहाँ पर भी है, if you send that link to me, so I can add that to the caption के if somebody would want to buy. And it's an amazing book. और छोटी सी किताब है, 50 pages की. मेरी नाअहली और वक्त की कमी कि मैं नहीं उसको अभी तक पढ़ पाई हूँ complete, लेकिन whatever I've read, it's quite interesting. So thank everybody who joined and who is watching right now, and all those who will watch later. I'm sure you'll enjoy this conversation, and you'll learn something nice, because whatever we have spoken about, ये हमारी जिंदगी की कामयाबी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कोई भी शख्स कामयाब हो ही नहीं सकता having a negative mindset. बातें हम बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन हकीकत में हम ज़्यादातर नेगेटिव लोग होते हैं. आई होप कि जिसका 2020 अच्छा नहीं गुजर रहा था, उसकी ज़िंदगी में कोई मिरेकल हो जाए, और जैसे ही 1 जनवरी की डेट कैलेंडर पे आए, आपकी ज़िंदगी के सारे मसले हल हो जाए. अगर वो नहीं हो रहा तो प्लीज स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ.
सेल्फ डेवलपमेंट पे काम कीजिए, देखिए आप इर्द गिर्द के लोगों के लिए न्यूसेंस तो नहीं है, stop complaining and whining, think positive, and all those who have learned some new skill, who was bracing themselves up to deal with the challenges, coming up challenges of 2021, congratulations, आपने बहुत अच्छा काम किया पूरा साल, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको जरूर नवाजेगा with the fruit that you're looking for. Have a happy, blessed new year. उम्मीद है कि आप सबको तमाम जो आने वाला साल है बहुत खुशियों से भरा हुआ हो और तमाम मेरी दुआएं आपके साथ हैं. And thank you, Sahib, once again, and everybody. See you in 2021 with some amazing guests. Allah Hafiz.